So friends, in this part of the series, we are going to see the 2014 questions of geography and agriculture. The first question that we are going to encounter is about continental drift and glacial cycle. What is the question? Which of the following phenomena might have influenced the evolution of the organism? So, evolution of the organism, Charles Darwin talks about it. Other scientists are also talking about it. Evolution of organism in terms of its body features, in terms of its strength. Okay, body feature means strength, types of muscles, fur coat, color of the body, color of the coat. Okay, horns, where it is amphibian or where it can live only in the water or it can only live on the land. Okay, so different changes have happened in the body structure of an organism depending upon the surrounding climate. So this question is about that. Which of the following phenomena might have influenced the evolution of organism? First is continental drift. So you know Wegener has given the theory of continental drift. In that he says that in all the landmass was together at one point of time called as a Pangea. Okay, this landmass broke and the different parts of this landmass travelled in the different regions of the world. So you know when landmasses are traveling in the different regions, they are going to travel through the different climatic zones. Like India was somewhere closer to equator or below equator in the southern hemisphere. So India crossed the southern hemisphere, came to the equator, then crossed the equator and came into the northern hemisphere. So definitely India passed through various climatic zones. So when India was passing through the climatic zones, definitely organisms would have on the Indian subcontinent would have experienced the different types of climates. And to acclimatize with that type of climate, definitely the evolution would have happened inside them. So continental drift is definitely responsible for the evolution of organism. Okay, so this is a correct answer. Okay, so one is correct. That means B option is getting eliminated. Only two. Okay, neither 1 or 2 भी eliminate हो जाता है, D भी eliminate हो जाता है, बचा A and C. Glacial cycles. Glacial cycle means what? Glacial cycle means this is the time when the earth goes through a cooling and heating. So when it is undergoing a cooling phase, then most of the earth is covered by the huge glaciers and snowfall. When it is going through the heating phase, then glacials melt. So when earth is getting cooled down, definitely the organisms require certain body features which can protect them from the heat, which can protect them from the cold. When earth is going through the heating cycles, then organisms need some feature which can protect them from the heat. So this will also be responsible for the evolution of the body of the organism. So definitely both are the responsible. So correct answer is option C. Okay, so option C is the correct answer, that glacial cycle as well as continental drift both are responsible for the organism and their evolution. Next question. The seasonal reversal of the wind is a typical characteristics of. ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ऐसे की ऐसा ही सेंटेंस है. इसका एक कैरेक्टरिस्टिक मॉनसून क्लाइमेट का. Seasonal reversal of the wind for 6 months monsoon winds are blowing from southwest to northeast. Another 6 months they are blowing from northeast to southwest. So seasonal reversal is a characteristics of the monsoon type of climate. So no need to discuss this thing. So for summer season they are blowing from southwest to northeast. Winter season they are blowing from northeast to southwest. So this is a characteristic of a monsoon season. Okay, so you already know this. Next question. With reference to Changpa community of India, consider the following statement. Yes, one more thing. Tribe chapter is very important. You should know all the major tribes in the India and each major tribes in each and every zone of India. Northern zone, central zone, eastern zone, western zone, northeastern zone. All these zones you should know what are the major tribes. Okay. So Changpa tribe. Changpa tribe is one of the communities living in the Leh Ladakh region of India. Okay. This Changpa community, they rear the goat called as a pashmina. Sorry, they rear a goat which gives the wool called pashmina. Okay. So this Changpa community is famous for that. When they rear that goat gives this wool called as a
pashmina. This wool is sold to the Kashmir Valley, and in Kashmir Valley, these people they make a pashmina shawls out of pashmina wools. Okay, so they live mainly in the state of Uttarakhand. Wrong है. तो statement 1 wrong होता है तो option A and D is eliminated. They rear pashmina goats and they yield fine wool. बहुत सही कहा. ओके, जनरली गोट्स जो होती है वो उल नहीं देती है, शीप जो होती है उल देती है. बट यहाँ पे क्या है कि इतना ज्यादा ठंडी होता है, ऐसा क्लाइमेट होता है, बिकॉज ऑफ दैट गोट के ऊपर भी उल आ जाता है. सो दिस पश्मीना गोट इज गिविंग द उल. ओके, दे आर केप्ट इन द कैटेगरी ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स. सो यस, दे आर द पार्ट ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स. ओके, सो 2 and 3. So correct option is B. Okay, so Changpas are very important communities in the Ladakh region, Leh Ladakh region. You can see these are the Changpa people, these are the Changpa women, and these are the goats. These are the Pashmina goats. So they harvest these Pashmina wool and sell it to the Kashmir region. Okay. Next question. Consider the following towns in India: Bhadrachalam, Chanderi, Kanchipuram, Karnal. Which of the above are famous for the production of traditional saris and fabric? भद्राचलम में पेपर इंडस्ट्री ज्यादा है. ओके, यहाँ पे सारीज वगैरह नहीं बनता है. ओके, तो अगर भद्राचलम आपको पता है सारीज नहीं बनता है तो डायरेक्टली यू कम टू द ऑप्शन बी, दैट इज 2 and 3. दैट इज अ करेक्ट ऑप्शन. तो उससे एलिमिनेट हो जाता है. चंदेरी साड़ी का नाम आपने सुना है. ओके, कांचीपुरम भी आपने सुना है. कांचीपुरम की साड़ी तमिलनाडु में बहुत फेमस है. करनाल तो हरियाणा में. हरियाणा के लोग साड़ी तो नहीं बनाते, आपको पता है. हरियाणा के लोग खेती करते हैं, वो लोग बॉडी बिल्डर होते हैं, वो लोग ओलंपिक्स में दौड़ते हैं, वो साड़ी वारी बनाने का. अपने महावीर फोगट का मूवी भी देखा है, आमिर खान का दंगल. तो हरियाणा में कहीं पे भी आपको पता है कि लोग जो है वो दंगल वाला काम और ओलंपिक्स वाला काम करते हैं. मोस्ट ऑफ द ओलंपिशियंस, लाइक 40% of the Olympians are from Haryana and Punjab. Okay, so these people they don't produce saris. Karnal तो नहीं है. So 2 and 3. Okay, so correct option is 2 and 3. So Chanderi and Kanchipuram. These are the important places. Okay. Next, consider the following rivers: बराक, लोहित, सुबनश्री. देखो ये ब्रह्मपुत्र के ट्रिब्यूटरीज है, रोहित एंड सुबनश्री. ब्रह्मपुत्र फिर से आ गया. Which of the following above flows through the अरुणाचल प्रदेश? ओके, तो बराक जो है मणिपुर में ओरिजिन होता है उसका, फिर असम में जाती है रिवर, फिर डाउन फ्लो करके फिर वो भी गंगा सुरमा मेघना रिवर सिस्टम का एक पार्ट बन जाती है. ओके, सो बराक रिवर इज नॉट फ्लोइंग थ्रू अरुणाचल प्रदेश. ओनली लोहित एंड सुबनश्री आर फ्लोइंग थ्रू द अरुणाचल प्रदेश. सो when Brahmaputra enters into the Arunachal Pradesh, then this tributaries join and Brahmaputra swells. The huge volume of the river is because of Lohit, Subansri, Dhanasri, okay, Kameng, okay. So because of that it becomes a huge. So correct answer is 2 and 3, okay. So one of the very easiest question if you know the tributaries of Brahmaputra. Next, these are the map based questions. Cardamom Hill, Coromandel Coast. अगर आपको ज्योग्राफी का थोड़ा नॉलेज है तो हम इसको कैसे एलिमिनेट करना है वो देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच? कैमूर हिल्स कोंकण कोस्ट, महादेव हिल्स सेंट्रल इंडिया, मिखिर हिल्स नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया. ओके, सो डेफिनेटली यहां पे देखा जाए कार्डमम हिल्स, दे आर द सदर्न मोस्ट हिल्स इन द केरला, तो ये रॉन्ग हो जाता है. ओके, कार्डमम हिल्स रॉन्ग. कैमूर हिल्स कोंकण कोस्ट, कैमूर कोंकण कोस्ट का कोई कोस्टल रीजन पे हिल्स ज्यादा नहीं है. कोस्टल रीजन्स आर प्लेन रीजन, तो कोंकण पे भी ये कैमूर हिल्स नहीं हो सकती है. कोंकण पे सारा वेस्टर्न घाट है. कैमूर हिल्स जो है सेंट्रल इंडिया में, छत्तीसगढ़ में, एमपी में है. महादेव हिल्स सेंट्रल इंडिया में है. मिखिर हिल्स, मिखिर है, डाफला है, मिश्मी है, सारा नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का है. सो 3 and 4 इज द करेक्ट ऑप्शन. सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन. सो you should know all the major hills, major mountain ranges in India. Okay, northern mountain ranges, central mountain ranges, southern mountain ranges. Like downside you have a cardamom, above that you have a Anamalai, above that you have a Nilgiri. Then you go to the eastern ghat. Eastern ghat, as you go, you have a Chevroy, you have a Palakonda, you have a Velikonda. Like you go upwards, Palani hills. Central India, as you go to the central India, then you have a Balaghat ranges,
then Ajanta ranges, Satmala ranges, Satpura ranges, Mahadev, Gavilgad, Bagh, Kaimur. So like this they are in the central India. Okay. Northern India, Trans-Himalayan ranges, Karakoram, Ladakh, Jaskar, then Greater Himalayas, then Lesser Himalayas, Pir Panjal, Dhauladhar, Nagtibba, Masuri. Then you have a Shivalik ranges. Like that you should know at least major hills. You go to the northeastern India, Mishmi hai, Dafla hai, Miri hai, Abhor hills are there. Then Meghalaya, Garo Khasi, Jaintia hai. Then closer to Manipur and Meghalaya you have Barel ranges. Then Purvanchal is there, Naga hills, Manipur hills, Mizo hills. So like that major mountains of India you should know, you should by heart, okay, all these mountains. Okay. So the correct answer is option number C. Next question. Okay. Consider the following pairs: national highways and cities connected. NH4, NH6, NH5. इतना कौन करता है? कोई नहीं करता है. तो ऐसे क्वेश्चन छोड़ देने चाहिए. अगर नहीं पता है तो इसको छोड़ दो. ओके, ऐसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते. अभी मुझे भी पता नहीं सारे. ओके, तो अगर इसका आंसर पूछा जाएगा एक्चुअल एग्जाम में तो मैं भी इसका आंसर नहीं कर पाऊंगा, मैं छोड़ दूंगा उसको. ओके, सो अगर देखा जाए तो इसका आंसर क्या है? ओके, ऑप्शन डी इज देयर. नन ऑफ द अबव्स आर करेक्ट. ओके, सो NH4 फ्रॉम थाने टू चेन्नई वाया पुणे. ओके, NH6 धुले टू कोलकाता वाया नागपुर. NH15 पठानकोट एंड कांडला वाया अमृतसर. So such question should be left. No need to worry about such question. Okay, because these questions are made that you should deliberately to make you falter in the exam. Okay, let us move to the next question. Which one of the following pairs of islands are separated from each other by 10 degree channel? NCERT में दिया हुआ है. NCERT इंडियन NCERT ठीक से पढ़ा है आपने क्लास 12th का, तो ये आंसर आप इजीली आंसर इसका आ जाएगा कि अंडमान निकोबार जो है दे आर सेपरेटेड फ्रॉम 10 degrees, sorry, yeah, so 10 degrees channel. Okay, so like this option A, sorry, 1 2 3 4 it is mentioned, but the option is option A. So like this you can, through NCERT we can solve these questions. Okay, next question. Turkey is located between which seas? Turkey is located between Black Sea and Mediterranean Sea. अगर आप देखोगे तो एटलास में आपको दिखेगा ब्लैक सी एंड मेडिटेरियन सी के बीच में है तुर्की. आई थिंक आई हैव द मैप. ओके, यू हैव ब्लैक सी, मेडिटेरियन सी, बीच में है तुर्की, इसका कैपिटल है अंकारा. ओके, सो वेरी सिंपल क्वेश्चन इफ यू नो द मैप. ओके, सो अगर यहाँ पे देखा जाए तो गल्फ ऑफ सुएज और मेडिटेरियन सी, तो आप निकाल सकते हो कि सुएज और मेडिटेरियन सी के बीच में नहीं है. डेड सी तो इजराइल में है और गल्फ ऑफ अकाबा उसके बीच में भी नहीं हो सकता है. बचा ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी. कैस्पियन सी इज वेरी क्लोज टू द यूएसएसआर, सेंट्रल एशिया. ओके, तो तुर्की का अप्रोप्रिएट लॉजिकली भी इसको निकाल सकते हो कि ब्लैक सी एंड मेडिटेरियन सी. थोड़ा लॉजिकली भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the correct sequence of occurrence of following cities of Southeast Asia as one proceeds from south to north? Bangkok, Hanoi, Jakarta, Singapore. Now one more thing you should remember. You have to by heart all the capitals and rivers flowing in the Asian countries. You should know their geographic locations. You should know the capitals of those countries and you should know the major rivers flowing through the capital. Because there are high chances that Asian look east policy, act east policy and Asian is the major focus of all the countries and India as well. For the economic gains, we are collaborating with these countries more and more through various accords and through various agreements. So in future, so many times you will come across the questions regarding these countries in geography, in mapping. So now what they are asking? So these are some of these are capital of these countries. Okay, so they are saying ki arrange these from south to north.
सो साउथ टू नॉर्थ अगर अरेंज करना है, ओके, तो सबसे साउथ पॉइंट पे आएगा जकार्ता, इंडोनेशिया, देन सिंगापुर, then Bangkok, and then Hanoi. Okay, so we will see. I have a map as well. I think I have brought a map for you guys. Okay, so you can see Indonesia, you have Jakarta, then here you have a Singapore, okay, then here Bangkok, and then here you have a Hanoi, okay, Vietnam. Okay, so like this you should know all the places in the Southeast Asia. Okay, this is one of your homeworks. You should do this, everyone. Okay. Next question. Consider the following techniques or phenomena: budding and grafting in fruit plants, cytoplasmic male sterility, gene silencing. Which of the above are used to create transgenic crops? Transgenic. Trans means what? Genic. Transgenic means what? Genes have been transferred from one plant or to another plant. Okay, you want to transfer gene from one plant to another plant. So, which of the following techniques can be used for that? So, अगर देखा जाए तो बडिंग एंड ग्राफ्टिंग से भी जीन जाता है. Okay, scientists are doing budding and grafting. They did not know that gene exchange between plants can happen. Okay, when you graft a stem of one plant to the root of another plant or stem of one plant to the stem of another plant, so grafting may it is done, budding may it is done. Okay, so through that method gene can be transferred. Desired or undesired, you don't have control in that which gene will go from one plant to another plant, but gene transfer can happen through budding and grafting. It is possible. साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी. साइटोप्लाज्म क्या होता है? एक सेल होता है एनिमल का ऐसे, ओके, उसमें एक न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं, बाकी बहुत सारी चीजें होती है इसके अंदर. ओके, तो सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म. ओके, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी means the pollen grains of the plants are not capable of fertilizing the gamete, female gamete. So, in the cytoplasmic male sterility is a condition, it is an outcome of hybridization or it is an outcome of genetic engineering. Through genetic engineering, you can create certain plants who are cytoplasmically sterile. That means the pollen grain that they are going to produce, this pollen grain will not meet with the female gametes in the plants and will not produce the viable seeds. So, because of that, farmers have to go into the market and buy new seeds from the commercial companies. Okay, because the most of the hybrid plants which are genetically modified, they are cytoplasmically sterile. Okay, these plants, they will produce food. Okay, they will produce grains, but finally their flowers will produce pollen grains which are sterile. They won't be able to mate with the female gamete. So, cytoplasmic male sterility is a condition. It is not a technology for the creation of gene transfer or to create a transgenic crops. Transgenic crops में you will have a cytoplasmically sterile males. Okay, so this can be wrong. तो दो जाता है इसमें से. Okay, D भी, तो इसमें से D and B ऑप्शन चला जाता है. नन भी नहीं है, वन तो ठीक है. जीन साइलेंसिंग. साइलेंसिंग मतलब क्या? चुप कराना. किसको चुप कराना? जिन को चुप कराना. कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जिनके एक्सप्रेशन हमें नहीं चाहिए. Okay, so with certain technologies you can silence the expressions of those genes. So particular characteristics of a plant or animal cannot be produced. For example, because of the certain expression of a certain protein, what is happening? A plant is becoming more exposed to the diseases. So if you silence that particular gene, then that protein will not be produced. So that plant can be disease resistant or it can be drought resistant. So this gene silencing technology can be used for the production of transgenic crops. So this goes, so 1 and 3. So correct option is option C. So biotechnology in the agriculture is very, very important topic. You must know the biotechnology. Right now, because of corona and all, you hear that RT-PCR test and this. So what is RT-PCR? What is reverse transcriptase? What is PCR? Polymerase chain reaction. This is also part of biotechnology. So in science and technology, in agriculture, biotechnology is very, very important. Okay, they are saying biological warfare. The future wars will be the biological warfare. Okay, this corona is there. Some people are calling it a biological weapon.
Okay, you should know what is biological weapon, what is a plasmid, what is a virus, what is a bacteria, what is a nucleus, what is a DNA, what is a chromosome, what is a mutation, what is a gene modification, gene silencing, everything you should know. What is a mRNA, rRNA, DNA? DNA based vaccine is coming now. Cadila Healthcare is going to make a DNA based vaccine, which is a plasmid based vaccine. So these terminologies are very important. You should know this because they will be asked again and again. Okay. So agriculture, biotechnology is also very important. Which one of the following statements are correct regarding the vegetative propagation of plant? Vegetative propagation क्या होता है? Okay, propagation मतलब reproduction. Okay, but reproduction में क्या होता है? एक मेल होता है, एक फीमेल होता है. आपको पता है reproduction कभी भी होना चाहिए, उसमें मेल फीमेल होना चाहिए. Without that reproduction is not possible. But evolution of the organism happened. Initially there were no male and female. There used to be only one. Okay, when initial organisms were produced in the sea. Okay, plants were produced after that. So plants, there were no male and female. Only one plant was there. Algas were there. Bryophytes were there. So how they used to propagate? They used to propagate by vegetative propagation. Means कि एक पत्ता था, पत्ते का टुकड़ा गिर गया कहीं पे, तो पत्ते के टुकड़े से नया प्लांट आ जाएगा. ओके, कहीं पे एक टहनी गिर गई कहीं पे, वो टहनी से ही एक नया प्लांट आ जाएगा. तो इसके लिए सीड की जरूरत नहीं है. सीड फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं है. सीड इज नथिंग बट ओव्यूल. ओके, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल. ओके, सो यहाँ पे फर्टिलाइज्ड ओव्यूल की जरूरत नहीं. प्लांट के किसी भी पार्ट से जो जमीन पे गिर गया, वहां से क्या हो सकता है? नया प्लांट आ सकता है. इसे बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन. सो वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्रोड्यूसेस क्लोनल पॉपुलेशन. सो डेफिनेटली यहाँ पे जब भी फॉर एग्जाम्पल एक प्लांट का पत्ता कहीं पे गिर गया, उससे नया प्लांट आ गया, तो जो प्लांट का जीन ओरिजिनल हो गए पहले वाले प्लांट में, वो भी नए वाले प्लांट में भी होंगे. सो दैट न्यू प्लांट विल बी द क्लोन ऑफ दिस प्लांट. सो वेजिटेटिव प्रोपगेशन विल प्रोड्यूस अ क्लोनल पॉपुलेशन. सो क्लोनल पॉपुलेशन विल बी प्रोड्यूस. सो वन इज करेक्ट. सो वन, अगर स्टेटमेंट वन करेक्ट है, सो ऑप्शन बी इज एलिमिनेटेड. ओके, नाउ व्हाट ऑप्शन? वेजिटेटिव प्रोपगेशन हेल्प्स इन एलिमिनेशन ऑफ वायरस. वायरस एलिमिनेशन होने का और वेजिटेटिव प्रोपगेशन का कोई रिलेशनशिप नहीं है. वो तो बस इट इज अबाउट रिप्रोडक्शन, इट इज नॉट अबाउट डिसीज रेजिस्टेंट. सो वेजिटेटिव प्रोपगेशन, प्रोपगेट करना है अपने आप को. इट इज नॉट अबाउट द रेजिस्टेंट, इट इज अ प्रोपगेशन. सो सेकेंड ऑप्शन इज रॉन्ग. सो वेजिटेटिव प्रोपगेशन हेल्प्स इन एलिमिनेशन ऑफ द वायरस. सो सेकेंड इज रॉन्ग. सेकेंड रॉन्ग होता है तो डी भी एलिमिनेट हो जाता है. थर्ड, vegetative propagation can be practiced most of the year. Yes, you can practice it most of the year. Vegetative propagation, there is no requirement of flowers, there is no requirement of seeds, there is no requirement of anything. So directly you can grow from any part of the plant. Okay, vegetative propagation. So correct option is option C. Okay, so I hope you guys have understood this. Okay, so biotechnology and plant science, very important. Okay. Okay. Next question, agriculture. Region and well known for the production of किन्नूर अरेका नट. किन्नूर हिमाचल प्रदेश में ऑरेंजेस मिलते हैं, जिसे किन्नू ही बोलते हैं. किन्नू ऑरेंजेस दिल्ली में मिलते हैं. जो लोग दिल्ली में पढ़ाई के लिए आते हैं उनको पता है. किन्नूज, दे आर वेरी स्वीट एंड दे आर वेरी चीप एंड दे आर वेरी न्यूट्रिशियस. They are very juicy. So this, they are produced in the kinnus. Areca nut is a tropical crop. Areca nut मतलब सुपारी. सुपारी जो होती है वो साउथ इंडिया में होती है, तमिलनाडु में है, केरला में है, कर्नाटका में. It cannot be produced in the colder region. So option 1 is wrong. मेवात हरियाणा, मैंगो. देखो, मैंगो is also mostly grown in the tropical region. टेम्परेट रीजन में भी आता है, बट इतना अच्छा उसका क्रॉप नहीं आता है. तो मेवात हरियाणा में मैंगो नहीं ग्रो कर सकते. यूपी में ग्रो कर सकते हैं, बिहार में ग्रो कर सकते हैं, थोड़े मैक्सिमम साउथ सदर्न इंडिया में. सो मैंगो शावर आपको पता है कर्नाटका में होता है, तो केरला में होता है, कर्नाटका में होता है, महाराष्ट्र में होता है. महाराष्ट्र में भी प्री मानसून शावर होता है, उसको बोलते हैं अंबेसरी. अंबे मीन्स मैंगो, सो इट्स गुड फॉर द मैंगो क्रॉप. So mango is mostly the characteristics of the tropical region. It's grown good in the tropical and closer to the tropics. So second भी wrong है. Coromandel coast, soybean. Okay, soybean, Maharashtra and Madhya Pradesh are very famous for production of soybean. देखा जाए तो तीनों के तीनों भी wrong है. So correct option is option D. Okay.
So I hope you can apply your little bit of logic over here. Okay, so हिमाचल में आपको अगर पता होगा कि अरिका नट नहीं हो सकता है, मेवात में पता होगा, सिर्फ 3 बचता है, तो इतना रिस्क आपका रहता है कि ऑप्शन बी आप मार्क्स कर सकते हो, तो या फिर नन. सो बी एंड डी देयर विल बी कंफ्यूजन, बट एटलीस्ट यू कैन एलिमिनेट ए एंड सी. ओके, but you should know that the soybean producing state is soybean. We produce huge amount of soybean, and soybean oil is produced. People eat soybean as a vegetable. सोयाबीन रोस्ट करके जैसे कि मूंग दाल खाते हैं वैसे भी सोयाबीन खाते हैं. सोयाबीन का चाप बनता है, सोयाबीन का क्या क्या बहुत सारी चीजें बनती है, सोया मिल्क बनता है, बहुत सारी चीजें बनती है, टोफू क्या क्या बनता है. सो ह्यूज अमाउंट ऑफ सोयाबीन इज रिक्वायर्ड. सो यू शुड नो सम मेजर क्रॉप्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. Consider the following statements. Okay, so again, agriculture based question. Maize can be used for the production of starch. Maize is a starch. So maize का starch निकाल के आप उसका कुछ भी use कर सकते हो. So maize is used for production of starch. So statement 1 is correct. 3 is eliminated. So C is eliminated. Sorry, यहाँ पे थोड़ा misprint हो गया. A, B, C and D. Okay. तो यहाँ पे C जो है हम एलिमिनेट करते हैं. ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मेज कैन बी फीड स्टॉक फॉर बायोडीजल. दीज आर कॉल्ड एज अ सेकेंड जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन बायोडीजल्स. ओके, बिकॉज दे आर द फूड क्रॉप्स. सो एनी फूड क्रॉप्स यू कैन एक्सट्रैक्ट द ऑयल एंड कैन प्रोड्यूस बायोडीजल फ्रॉम दैट. सो दिस ऑप्शन statement 2 is also correct. So when statement 2 is also correct, option A is eliminated. 3. Alcoholic beverages can be produced by using maize. मेज से दारू बनती है सेंट्रल अमेरिका में. सेंट्रल अमेरिका में चिया फ्रूट्स बोलते हैं, चिया फ्रूट्स. ओके, तो चिया फ्रूट्स लोग जो है वो बहुत पीते हैं खुशी से. तो 3 भी करेक्ट है. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, 1, 2 एंड 3. सो ऑल द 3 आर करेक्ट. सो मेज अभी जो कुछ देर आर सम कंपनीज, दे आर मेकिंग प्लास्टिक टाइप ऑफ थिंग, पॉलीथीन टाइप ऑफ थिंग from the starch produced from the maize and all these things. तो बहुत सारे सुपर मार्केट्स में आपको प्लास्टिक और पॉलीथीन जैसी बैग्स दिखेगी, बट वो स्टार्च से बने हुए, प्लांट स्टार्च जैसे मेज वगैरह से बनाए हुए. तो उसका यूज हो सकता है इन सारी चीजों में. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नीम के बारे में है. व्हाट इज द क्वेश्चन? विथ रेफरेंस टू द नीम ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. क्या है स्टेटमेंट? नीम ऑयल can be used as a pesticide to control the proliferation of some species of insect and mites. As I told you, neem जो है, they are very good solution for the nematodes. Okay, so neem oil is a very good insecticide. Okay, so which of the following statement is correct? So neem oil can be used as a insecticide. So statement 1 is correct. So you can eliminate the option B. Neem seeds are used in the manufacturing of biofuels and hospital detergents. ये भी possible है, बायोफ्यूल बन सकता है नीम सीड से भी, क्योंकि नीम सीड का ऑयल भी निकलता है. तो 2 भी करेक्ट है, तो सी एलिमिनेट हो जाता है. नीम ऑयल एज एप्लीकेशन इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. डेफिनेटली इट हैज एप्लीकेशन इन द फार्मा इंडस्ट्री. बहुत सारे मेडिसिन बनते हैं नीम से. नीम की गोली, नीम टैबलेट आप देखते हो मार्केट में, आपको फार्मेसी शॉप्स में आपको नीम टैबलेट मिलेगी. ओके, सो फार्मेसी इंडस्ट्री में भी आपको नीम इंपॉर्टेंट है. डिसइंफेक्टेंट्स में भी यूज हो रहा है नीम. मेडिसिन, खाने के मेडिसिन में भी नीम यूज हो रहा है. Neem leaf has a very complex chemical inside. There are 50 to 100 complex chemicals are there inside the neem tree. It is one of the very mysterious plant. It is known in India since ancient time. Even in Ayurveda, it is called as a mysterious plant because this leaf of the neem is the only such leaf which has a 50 to 60 types of different chemical compositions which can be used for treating various diseases. Okay, so it has a pharmaceutical application as well. So correct option is option D. आपने देखा नीम कोटिंग यूरिया में भी आप नीम का यूज कर सकते हो. ओके, कोरोना टाइम्स में तो लोग नीम के पत्ते खा रहे हैं, गोली बना के खा रहे हैं, क्योंकि गले में जो है वायरस होगा तो मर जाएगा, बैक्टीरिया होगा तो मर जाएगा. और नीम आप खाते हो तो जो हेल्पफुल बैक्टीरिया है आपके बॉडी को वो नहीं मरते. ओके, जो पैथोजन से वो मर जाते हैं. सो नीम का है कि उसको सिलेक्टिविटी है कि सिलेक्टिवली मारता है. जैसे आप एंटीबायोटिक खाओगे, एंटीबायोटिक से सारे मर जाएंगे एक साथ, बट नीम खाओगे तो जो हेल्पफुल और बेनिफिशियल बैक्टीरिया है वो नहीं मरते. ओके, जो आपको हार्मफुल बैक्टीरिया है वो मरते. ओके,
So these are the various applications of neem. Okay, I hope you understood. Next question. In the context of food and nutrition security of India, enhancing the seed replacement rates of various crops help in achieving the food production targets of the future. But what are the constraints in its wider or greater implementation? So seed replacement ratio मतलब क्या है? Seed replacement ratio, the one of the assumption here is that whatever seed that farmer is using for producing the grains, they are of inferior quality. So you have to replace these seeds with the hybrid high quality seeds for the better production and high quality production. So this is the assumption. So government wants to give the better seeds to the farmer, either through private agency or government companies, like there are seed research companies of the government. Okay, so this is a seed replacement rate. So they want to replace the farmer seed with the government producing or the high quality private company producing seeds. So अभी ये क्वेश्चन क्या बोलता है, ओके कि इसमें इम्पेडिमेंट्स क्या आ रहे हैं, व्हाट आर द इम्पेडिमेंट्स? देयर इज नो नेशनल सीड पॉलिसी, ये गलत है. 2002 में नेशनल सीड पॉलिसी बनी है. ओके, सो ऑप्शन स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग. स्टेटमेंट 1 जब रॉन्ग है तो ये एलिमिनेट हो जाता है. देयर इज नो पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन सीड कंपनीज इन द सप्लाई ऑफ क्वालिटी सीड्स, ये भी रॉन्ग है. माइको है, मोनसेंटो है, बहुत सारे है, महाबीज है, बहुत सारी कंपनीज बहुत सालों से इंडिया में. So private companies are also there who are producing good quality seeds. So second is also wrong. तो क्या जा रहा है? C भी eliminate हो रहा है, बचा B and D. There is a demand supply gap regarding the quality seeds in case of low value and high volume crops. This is true. Demand is very high. Farmers are demanding it very high, but companies are not able to produce the huge quantity of seed according to the requirement of farmer. So this is the one of the biggest impediment of the seed replacement. Because of that, seeds cannot be replaced very fast. Okay, because there is a demand supply gap for the low value and high volume crops. Okay, so the correct option is option B. Okay, so this is the correct option. So I hope you understand this. Next question. What are the benefit of integrated watershed development programs? Watershed क्या होता है? Watershed is the area of a small river which is flowing through a village or somewhere. Okay, so it's a catchment area of that small river. Catchment area भी बड़े रिवर का होता है, तो जहां जहां से ये फ्लो करती है रिवर, उसका जो छोटा सा कैचमेंट एरिया है उसे वाटरशेड बोलते हैं. So integrated watershed development. So you have to integrate various elements in the watershed development: well-being of the people, economic prosperity, conservation of the biodiversity, education of the people, women empowerment, along with the betterment of the watershed of that river and the farmers around that. Okay, so this is integration. This is integrated watershed development program. So what are the benefits of implementing the integrated watershed development program? So core benefits क्या है इसका? Prevention of soil runoff. So watershed जब आप develop करते हैं तो आप forest को grow करते हो, afforestation करते हो. So what happens? Because of that, rainfall directly do not hit the land. So soil runoff can be stopped. So option 1 is correct. Option 1 is, statement 1 is correct. So B is eliminated. Linking the country's perennial rivers with the seasonal river, not possible. Watershed development program is targeted towards the individual villages. So this is not about the river linking project, it is completely different. So दो जो है वो eliminate हो जाता है इसमें से. अगर when you eliminate 2, directly you eliminate A and D, or you can eliminate A, B and D. Directly you come to the answer C. Okay, so here by elimination method you can come to the answer C. Okay, so very simple. Okay, next question. What are the significance of practical approach of sugarcane production known as sustainable sugarcane initiative? Okay, so sustainable sugarcane initiative. So sustainable sugarcane initiative has been brought because of the intensive cultivation of sugarcane. Okay, there is a loss to the farmers
over usage of water, these things are happening. So what is about sustainable sugarcane initiative? Significance क्या है इसका? Okay, seed cost is very low in compared to the conventional method of cultivation. So is the seed cost very low compared to cultivation? Okay, so yes, seed cost is going to be low in the sustainable sugarcane cultivation. Drip irrigation can be practiced very effectively. ये भी सही है. Sustainable बनाना है तो drip irrigation practice करनी पड़ेगी. There is no application of chemical and inorganic fertilizers at all. Not possible. Okay, so not at all बोल रहा है. There is no application of any chemical fertilizers at all. Not possible. The kind of sugarcane area that we have, we cannot grow a huge area without applying chemical fertilizers right now. Not possible. So this is an extreme statement. Not at all बोल रहा है. So ये doubtful है, ये wrong है. So जैसे ही 3 निकलता है तो कहा क्या क्या जाता है? A, C and D. लॉजिकली देखा जाए तो पॉसिबल ही नहीं है. विदाउट गवर्नमेंट किसको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर देगा इतने सारे? पॉसिबल ही नहीं है. केमिकल फर्टिलाइजर हम नहीं दे पा रहे जो इंडस्ट्री में बन रहे, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कब सप्लाई कर पाएंगे? नॉट पॉसिबल. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. The scope of intercropping is more in this compared to the conventional method of cultivation. So we can plant another crops in between the sugarcane crops. So this can be done. Okay. So very simple. You can solve this. Next question. Consider the following programs or project and its ministry. Okay. Which of the following pairs are correctly matched? Drought prone area program, Ministry of Agriculture. No, this is Ministry of Rural Development. Desert development program, Ministry of Environment and Forest. No, this is also Ministry of Rural Development. National Watershed Development Program, Ministry of Rural Development. No, this is Ministry of Agriculture. So answer is D. Okay, you should know the programs and the ministry. So scheme documents. Okay, very important. Factual question. Now next question. Okay, so this is about 2014 questions and very interesting questions, very लॉजिकल क्वेश्चंस, कोर ज्योग्राफी क्वेश्चन जो सॉल्व करने में मजा आता है, थोड़ा सा दिमाग को परेशान नहीं करता है कि जो कोर ज्योग्राफी का नॉलेज है, कोर एग्रीकल्चर का नॉलेज है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं. ओके, थैंक यू, बाय बाय.